Good morning, dear students. Good morning to all the teachers who are present in the class. As you know, today we are going to discuss about air pollution, a hidden menace. So, dear students, as you know, air is highly essential for every living beings. We cannot live without air. So air is very important for human being. So when air is polluted and what are the impact on human being, today we are going to discuss. So let us go to smart board. Air pollution, a hidden menace. So let us start the first paragraph. Air pollution. Air pollution means, before we are going to discuss air pollution, let us know what is air pollution. Air pollution, when air gets polluted, आमे जदि ओडिया रे कहिमा वायु प्रदूषण एवं जितेबेले वायु रे विभिन्न प्रकार विषाक्त बाष्प मिसी जाए सेतेबेले वायु प्रदूषण होई थाए एवं वायु प्रदूषण वर्तमान गोटे मानव समाज पई गोटे लुक्कायित विपद लुक्कायित चेतावनी. What are the impact of human being of air pollution? Let us discuss, and first of all we shall discuss in first paragraph. No one can forget. So dear students, look at the first paragraph and listen to me. तो पिला माने जो छात्र छात्री माने तुम माने मन दे कि प्रथम पैराग्राफ टा मु पढुछि तुम माने मन दे कि एटा को सुनो तापरे मु ताकू पुंखानुपुंख भावरे तुम मान को सम्मुख रे उपस्थापन करिवि. No one can forget one of the most tragic industrial accident that occurred at Bhopal on 3 December 1984. Deadly gas from a chemical plant operated by Union Carbide escaped into the atmosphere, killing over 4,000 local residents and rendering blind and crippling a large section of the city's surviving population. Not only Bhopal, but now every city, every town, every corner of the earth is facing such a crucial problem. Every day, every month, every moment we breathe polluted air and may become a victim of air pollution. So the students, no one can forget one of the most tragic industrial accident through occurred at Bhopal on 3rd December 1984. 1984 मसीह जो गोटे मर्मन्तुद इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट अर्थात शिल्प दुर्घटना जो गोटे होता भोपाल रे 1984 मसीह केही भी भूली परिबे नहीं. नो वन कैन फॉरगेट दैट एक्सीडेंट एंड वेयर यू मस्ट think that where is Bhopal? So Bhopal, where there are 28 states in India, among them Bhopal is one. So let us see the map of Bhopal, Madhya Pradesh. Here this is the map of Madhya Pradesh. एटा होची मध्य प्रदेश रो मानचित्र. तुम माने देखि पारथो पिला माने भोपाल, और भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. Bhopal is the capital of Madhya Pradesh. Oh, here Bhopal, no one can forget. जो शिल्प दुर्घटना को जीवन रे कहीं भी भूली पारिबे नहीं, सेही शिल्प दुर्घटना मध्य प्रदेश रो भोपाल रे संगठित होइथिला. 1984 मसिया एप्रिल 1984 मसिया डिसेंबर 3 तारिख दिन आमर ए भोपाल रे मध्य प्रदेश रो राजधानी भोपाल रे संगठित होइथिला शिल्प दुर्घटना एवं सेहीटा थिला गोटे
गोटे मर्मन्तुद दुर्घटना जहाँकि 1984 मसीहा डिसेम्बर 3 तारिख रे संगठित होता। तो डियर स्टूडेंट, डेडली गैस फ्रॉम ए केमिकल प्लांट ऑपरेटेड बाय यूनियन कार्बाइड एस्केप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जो डेडली गैस गोटे मारात्मक बाष्प बा गैस कौन होता पिला माने सेटा वायुमंडल को निर्गत होता। ऑपरेटेड बाय यूनियन कार्बाइड गोटे केमिकल प्लांट गोटे रासायनिक कारखाना बा रासायनिक शिल्प रे व्यवहृत गोटे डेडली गैस वायुमंडल रे मिसी जाइथिला, किलिंग ओवर 4000 लोकल रेसिडेंट्स and rendering blind and crippling a large section of the city's surviving population. So, what is the consequence of this industrial accident? हमर एई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट रो तार परिणाम ता फलाफल कौन है जो विषाक्त गैस हमर वायुमंडल को मिसी जाइथिला, जोटा कि 1984 मसीहा डिसेम्बर 3 तारिख रे मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल शहर रे ए मर्मन्तुद दुर्घटना घटीला। एवं तार परिणाम स्वरूप कौन होता पिला माने जे किलिंग ओवर 4000 लोकल रेसिडेंट एवं 4000 स्थानीय लोक माने लोकल रेसिडेंट्स माने स्थानीय लोक जो माने कि भोपाल रे बसवास करुथिले सेही माने 4000 लोक से विषाक्त गैस फल रे मृत्युवरण करथिले। एंड रेंडरिंग ब्लाइंड एंड क्रिपलिंग, अर्थात क्रिपलिंग मीन्स पिला माने देखो क्रिपलिंग डैमेजिंग पंगु कर देबा, अक्षम कर देबा व्यक्ति को ताको हमें कौन कहिबा क्रिपलिंग। डैमेजिंग तार अन्य अर्थ है क्रिपलिंग रो हमें कौन कहिबा डैमेजिंग पंगु कर देबा। तो पिला माने एई दुर्घटना इन दिस एक्सीडेंट इन दिस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट 4000 लोकल रेसिडेंट्स वर किल्ड एवं 4000 ऊर्ध्व लोक मृत्युवरण कले एंड रेंडरिंग ब्लाइंड एंड crippling a large section of the city's surviving population। एवं सहर अधिकांश लोक संख्या जो माने कि बंची जाइथिले पिला माने सहर जो लोक संख्या जेतिकी थिला जो माने बंची जाइथिले सेमानंक भितरु अनेक ब्लाइंड अर्थात अंध होई गेले। कोन होई गेले पिला माने अंध होई गेले, ब्लाइंड एंड क्रिपलिंग पंगु होइले, काम करिवार शक्ति हरेले, अक्षम होई गेले। क्रिपलिंग मीन्स हला हमर कोन पंगु करिबा लेकिन आउ जो भोपाल रे जो केमिकल प्लांट थिला सेटा यूनियन कार्बाइड द्वारा परिचालित हेउथला। तो पिला माने एटा गुटे किते विराट दुर्घटना, ए शिल्पजनित दुर्घटना जोटा कि 4000 रु ऊर्ध्व लोकंकु मृत्युवरण रे पकईथिला एवं सहर अधिकांश लोक जो माने भी बंची जाइथिले सेमा बंची जाइथिले अधिकांश लोक अंध होई गेले एवं आउ केते लोक पंगु होई गेले। नॉट ओनली भोपाल, तो इट वाज द इंसिडेंट ऑफ भोपाल, इट वाज द इंसिडेंट ऑफ भोपाल। यह भोपाल दुर्घटना थिला, एटा भोपाल रो शिल्प दुर्घटना थिला। एवं नॉट ओनली नाउ ए डेज आमे जदी देखिबा पिला माने एबे नॉट ओनली भोपाल बट नाउ एवरी सिटी एवरी टाउन एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ इज फेसिंग सच ए क्रूशियल प्रॉब्लम। आउ आमे जदी विचार करिबा जे वर्तमान केवल भोपाल घटना से 1984 डिसेम्बर 3 रे जो भोपाल रे घटीला शिल्प दुर्घटना जार परिणाम बहु भयावह होता। भोपाल दुर्घटना केवल भोपाल रे नुहे, वर्तमान देखा जाउछि जे प्रत्येक नगर एवरी सिटी एवरी टाउन एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ पृथ्वीर कोण अनुकोण रे प्रत्येक नगर रे प्रत्येक शहर रे तो अर्थ इज फेसिंग सच ए क्रूशियल प्रॉब्लम। एवं एही प्रकार संकटमय समस्या दे वर्तमान पृथ्वी गति करुछि। संकट को प्रकार पिला माने जो आमे माने वायु प्रदूषण रो शिकार होउछु, वायु प्रदूषण रो समस्याटा सारा पृथ्वी एबे सेही समस्या को अनुभव करि पारुछि। एवरी डे एवरी मोमेंट वी ब्रीथ polluted air and may become a victim of air pollution। आमे निजर अज्ञतारे हो किंबा जानते हो आमे कोन करछु बिलन एवरी डे एवरी मोमेंट आमे प्रत्येक दिन माने अनुमान करथबो जे आमे प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त रे आमे दूषित पॉल्यूटेड एयर आमे कोन पॉल्यूटेड एयर आमे श्वासक्रिया रे नउछु। एई प्रकार वर्तमान पृथ्वी
सबु जगह प्रत्येक स्थान एवरी ईयर एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ पृथ्वीर कोन कोन रे द अर्थ इज फेसिंग एयर पोल्यूशन एवं एई हमर वायु प्रदूषण रो समस्या को सारा पृथ्वीर कोन अनुकोण रे वर्तमान सम्मुखीन हेउछि और पिला माने we breathe polluted and that polluted air we breathe and may become a victim of air pollution एवं आमे कोन आमे से एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण रो शिकार होउछु हम माने पिला माने वर्तमान वायु प्रदूषण प्रभाव एते पृथ्वी रे हेलाणी एवं आमे प्रतिदिन सेही भलिया प्रदूषित वायु नेउछु और से प्रदूषित वायु रो आमे शिकार होउछु आमे पीड़ित होउछु तो पिला माने लेट अस डिस्कस अर्थात आमे आलोचना करबा चलो जे आमे आउ टिके भलो भाबरे बुझिबा पई आमे कोन करबा आमे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन किछिटा आलोचना करबा तो पिला माने मु कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ता मु आलोचना करबी तम माने मन देखि सुनिबो ओके तो देखो सो इन दिस पैराग्राफ we have to discuss comprehension question and their answer and you have to listen that mindfully तो माने मनो देकरी सुनो what accident took place at Bhopal in 1984 एवं केउ घटना भोपाल रे 1984 मसिया रे घटी थिला tragic industrial accident took place in Bhopal in 1984 अर्थात 1984 मसिया भोपाल रे आमर शिल्प दुर्घटना घटी थिला एंड अनदर क्वेश्चन अन्य क्वेश्चन पिला माने व्हाई इज इट कॉल्ड एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आमे एहा को काहे की इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कहिबा अर्थात शिल्प दुर्घटना काहे की कहिबा इट इज कॉल्ड एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट because the deadly gas from a chemical plant operated by union carbide escaped into the atmosphere अर्थात आमे याकू शिल्प दुर्घटना कहिबा कोन पई पिला माने जे एई दुर्घटना एटा शिल्प कारखाना रे संगठित हेइतला एवं एई घटनाटा हमर यूनियन कार्बाइड द्वारा परिचालित केमिकल प्लांट रु गोटे विषाक्त गैस वायुमंडल को निर्गत हेइतला एवं सही वायुमंडल को सेटा दूषित कर देइतला तो सेथि पई जेहेतु आमर इंडस्ट्री रु एई दुर्घटनाटा घटितला पिला माने तो सेथि पई हम कोन कहबा को इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट व्हाई इज इट कॉल्ड एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इट इज कॉल्ड industrial accident because the deadly gas from a chemical plant operated by union carbide escaped into the atmosphere then what were the tragic consequences of it पिला माने हमें पूर्व आलोचना करला कोन कहले पिला माने जे एहार परिणाम ता कोन एहार परिणाम कोन हला एहार परिणाम कोन थिला what were the tragic consequences of it so let us discuss the tragic accident killed 4,000 local residents and rendered blind and it also damaged a large section of the city's population. Before I have told you, in this accident, over 4,000 local residents were killed and many people became blind and crippling. It has also damaged a large section of the city's population. This was the tragic consequences of it. এবং এই শিল্প দুর্ঘটনার এর মর্মন্তুদ দুঃখদ পরিণাম ଥିଲା এইটা এই যে ভোপাল রে শিল্প দুর্ঘটনা ঘটিলা তার পরিণাম এইটা ଥିଲା যে ওভার 4000 অর্থাৎ 4000 লোক এবং অনেক অন্ধ যে সহরর बाकी जो सहर जनसंख्यार अनेक लोक बंची थे से माने अनेक लोक अंध हो गले एवं केते लोक पंगु मध्य हो गले so this was the comprehension question of paragraph 1 let us see the another paragraph so dear student a man can live without food listen to me mindfully a man can live without food for a month without water for 2 or 3 days but he cannot live without breathing
even for a minute. It is estimated that an average adult exchanges 15 kg of air a day in comparison to about 1.5 kg of the food consumed and 2.5 kg of water intake. It is obvious that the quantum of pollutants enter our body through respiration. Would be manifold in comparison to those taken in the polluted water or contaminated food. So, in this paragraph, you can imagine or you can say how air is important for human being. आमे एही paragraph रे पिला माने जे वायुटा केमिति मनुष्य पई निहाती जरूरी अटे, वायु मनुष्य पई केमिति निहाती जरूरी अटे, सेही विषय आमे एही paragraph रे पठन करिबा. We shall discuss. A man can live without food for a month. कहा जे पिला माने खाद्य बिना जणे मनुष्य किछि दिन बंची जीवो, गोटे मास without food for a month, गोटे मास बंची जीवो खाद्य बिना. Without water for 2 or 3 days, जदि पानी न पीबो ताले 2-3 दिन बंची जीवो. But he cannot live without breathing for a minute. किंतु से गोटे मिनिट जदि निश्वास नब नाही से बंची पारिबो नाही. So air is highly essential for human being or living being. अर्थात जीवंत मनुष्य पई ए जीव जगत पई वायु निहाती जरूरी अटे. We cannot live without air. It is said that you can live without food for a month, you can live without water for 2 or 3 days, but you cannot live without air. तुमे खाद्य बिना मासे बंची पारिबो एवं पानी बिना 2-3 दिन बंची जीवो, किंतु वायु जदि निश्वास जदि तुमे नेबो नाही ताहेले गोटे मिनिट भी तुमाने बंची पारिबो नाही, आमे बंची पारिबा नाही. So it is estimated that an average adult exchange 15 kg of air a day in comparison to about 1.5 kg of food consumed and 2.5 kg of water intake. So dear student, look at the chart. An average adult अर्थात प्राप्त वयस्क, जने प्राप्त वयस्क दिन को 1.5 kg रो खाद्य खाए आउ दिन को 2.5 kg रो पानी पिए. और जदि आमे विचार करबा एयर रो कथा ताहले दिन को से 15 kg रो वायु कोन करे पिला माने एक्सचेंज अर्थात वायु विनिमय करे, निश्वास प्रश्वास निये छाड़ी एते 15 केजी एयर ए डे. एन एवरेज एडल्ट जने प्राप्त वयस्क, एन एवरेज एडल्ट माने काना ओडिया रे काना कहमा जने प्राप्त वयस्क दिन को 15 केजी रो एयर नै थाए एवं दिन जदियो से दिन को 1.5 केजी रो खाद्य 2.5 केजी रो जल नै थाए, ता तुलन रे पिला माने an average adult exchange 15 kg of air a day. जने प्राप्त वयस्क 15 kg रो वायु दिन को विनिमय करि थाए. So enter about through respiration. It is obvious that the quantum of pollutants that enter our body through respiration means श्वास क्रिया. आमे जोटा नौछु आमे कोन नौ अम्लजान ग्रहण करू अंगारकाम्ल छाड़ू. तो पिला माने आमे जेहेतु 15 केजी दिन को आमे नौछु, केते केजी 15 केजी आमे एयर नौछु, तो आमे खाद्य जल अपेक्षा वायुटा बेसी मात्रा रे नौछु एवं वायु नेबा द्वारा पिला माने आमे कोन वर्तमान आमे पूर्वरु पढिछु जे आमे हमर अजाणते हो किबा जानतरे आमे पोल्यूटेड एयर प्रदूषित वायु दूषित वायु आमे नेउछु. सो इट इज ऑब्वियस दैट या स्पष्ट रूप रे जणा पडुछि, या स्पष्ट पिला माने कोन स्पष्ट द क्वांटम ऑफ पोल्यूटेंट्स दैट एंटर आवर बॉडी थ्रू रेस्पिरेशन अर्थात प्रदूषणकारी पदार्थ
जोटा कि आमे वायु माध्यम रे नौछु जोटा कि आम शरीर भीतर को प्रवेश करूची सेटा बेसी ओटे काठार पिला माने आमे जो दूषित खाद्य किंबा दूषित पानी पीउछु से पानी जेतिकी हमको क्षति पहुंचाई पारु नाही आमे जो प्रदूषित वायु बा दूषित वायु नेउछु से दूषित वायु आम शरीर को बहु मात्रा रे प्रभावित करूची दूषित करूची आमे दूषित खाद्य खाउछु आमे दूषित पानी भी पीउथिबा निश्चित भाबरे किंतु पिला माने सेही परिमाण रे आमे जो पवन नौछु आमे आगरु जानिले कोन जानिले पिला माने जे पर डे आमे 15 केजी एयर नौछु एवं से 15 केजी एयर जो नौछु जो परिमाण रे नौछु सेही परिमाण जदि आमे पोल्यूटेड आमे दूषित वायु नेले ताले हम दूषित खाद्य दूषित जल जेति नेबा ताठारु बेसी हमको एई वायु प्रदूषण रो आमे शिकार होउछु so this was the importance in this paragraph of air एवं ए पैराग्राफ रे हम कोन जानिले पिला माने जे वायु रो इंपोर्टेंस तार गुरुत्व केते हम जीवन रे रहउछि तो पिला माने हम आउट के बुझिबा तापरे हम ए पैराग्राफ रो हम कॉम्प्रिहेंशन लेट अस डिस्कस द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन in this paragraph so listen to me mindfully and look at the question how is air important for man अर्थात मनुष्य पई वायु केमिति गुरुत्व से हमें डिस्कस करले पिला माने तो हमें how is important air for man so air is essential for human livings air is essential for every living beings we cannot live without breathing and for breathing air is necessary so air is important for man हमें जानि छु पिला माने हमको पूर्व रो मु कहली हम डिस्कस करले कोन जे मनुष्य ए जीव जगत पई वायु निहाती जरूरी होते वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग हमें बिना निश्वास द्वारा हमें बंची पारिबा नाही हमें बिना निश्वास रे बंची पारिबा नाही वी कैन नॉट लिव 10 मिनिट विदाउट ब्रीथिंग हमें बिना श्वास करे गोटे मिनिट बंची पारिबा नाही तो ब्रीथिंग फॉर ब्रीथिंग एयर इज नेसेसरी हमरो श्वास क्रिया पई कोन दरकार एयर इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग एवं एयर टा हमरो निश्वास पई जरूरी सो इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मैन एयर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मैन देन व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एवं मनुष्य शरीर दूषितीकरण रो मुख्य उत्स कौन आम चर्चा कले पिला माने जे आमर भीतर को जो थ्रू द एयर आमर पवन मध्य रे आम भीतर को प्रदूषणकारी द्रव्य प्रवाहित होउछि तो मेन सोर्स कौन पिला माने व्हाट इज द मेजर सोर्स अर्थात मुख्य उत्स कौन आम शरीर भीतर जो प्रदूषण होउछि तार मुख्य उत्स कौन द पोल्यूटेड एयर वी ब्रेथ is the major source of contamination of the human body हमें जो दूषित वायु श्वासक्रिया रे नौछु सेटा होछि आमर शरीर प्रदूषण रो मुख्य उत्स कोटा मुख्य उत्स द पोल्यूटेड एयर वी ब्रेथ जो हमें प्रदूषित वायु दूषित वायु को हमें नौछु श्वासक्रिया रे सेटा होछि आम शरीर दूषितीकरण रो मुख्य उत्स so this is the second paragraph of your lesson air pollution. Let us see another paragraph of this lesson. So listen to me mindfully, students, dear students. So here air is mixture of gases. Air is mixture of gases comprising 78% nitrogen, 21% oxygen and little less than 1% argon. Together with 0.03% carbon dioxide, these elements make up 99.9% of dry air. As long as this composition is maintained, the air is pure. If this composition is altered, i.e. oxygen level gets reduced or irritating gases enter the atmosphere, then the air is said to be polluted.
and inhalation of this polluted air can lead respiratory disorder. So here the about the composition of air आमे तो माने जानि थो पिला माने जे वायुटा अनेक बाष्पर सम्मिश्रण समाहार अनेक बाष्प को नहीं गठित तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस आमर वायु होउसी आमर बाष्प मानकर समाहार कंप्राइजिंग 78% नाइट्रोजन जेउथिरे बा एयरटा 78% नाइट्रोजन 21% oxygen and a little less than 1% argon together with 0.03% carbon. So let us see the chart or diagram of air. So composition of air, let us see the chart. Composition of air, 21% oxygen, nitrogen 78%, argon, carbon dioxide and other gases 1%. That means a little less than 1%. पिलामाने वायु आमर अनेक गैस रो सम्मिश्रण अनेक गैस रो मिश्रण एवं जो 78% नाइट्रोजन रो परिमाण जोटा कि आमे कहूछु कोन पिला माने ओडिया रे नाइट्रोजन माने जबक्षारजान रो परिमाण हला 78% और 21 ऑक्सीजन अम्लजान रो परिमाण हला 21% आउ सामान्य एकरु सामान्य कम कौन अच्छी आर्गन ता संगे पिला माने कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात अंगारकाम्ल परिमाण होउची केते 0.03 केते 0.03 एवं एटा को नेइकरी हमर वायु समाहार और एटा को देखिबे आमे ए जो नाइट्रोजन 78% 21% ऑक्सीजन एंड लिटिल लेस देन 1% आर्गन टुगेदर विथ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जदि आमे मिसै देबा पिला माने ताले ड्राई एयर रो परिमाण केते हेबो 99.9%. These elements that means nitrogen, argon, carbon dioxide make up 99% of dry air अर्थात शुष्क वायु एवं एटा मिसला पर 99% होजे कोन शुष्क वायु. As long as the composition is maintained, the air is pure. तो पिला माने हमर 99 या को देखो पिला माने 99.9 एटा होची कानो ड्राई एयर एवं 99.9 पर्यंत जदि वायुर सम्मिश्रण सही हिसाब रे स्थिर रहिबो as long as this composition is maintained जदि एटा स्थिर रहिला that means कोन स्थिर माने कोन आमे सेते बेले कहिबा सेटा द एयर इज प्योर अर्थात वायुटा शुद्ध अछि विशुद्ध वायु एते बेले कहिबा जेते बेले वायुर परिमाण रे नाइट्रोजन 78% ऑक्सीजन 21% आउ लिटिल लेस देन 1% आर्गन और 0.03 जदि अंगारकाम्ल थिबो कार्बन डाइऑक्साइड थिबो आमे कहिबा जे वायुटा प्योर अछि दैट मींस शुद्ध वायु. If this composition is altered, जदि एई composition रे alter में काना गोटे बाधा हुए अलगा किछि घटे बाधा प्राप्त हुए ताले आमे कहिबा that means the oxygen level get reduced or irritating gases enter the atmosphere. जदि आमे एटा जदि किछि एफर्ट सेपॉर्ट हुए कोटा ए 99% 9 जो अछि ड्राई एयर सेथिरे 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन एंड ए लिटिल लेस देन 1% आर्गन एंड 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड जो एई परिमाण रे थिले आमे कहबा से शुद्ध वायु किंतु एथिरे किछि छेड़छाड़ जदि हुए पिला माने तो आमे कोन कहबा जे तार अर्थ कोन एथिरे किछि व्याघात जदि देखा दी तार अर्थ कोन the oxygen level get reduced or irritating gas enter the atmosphere. जदि अम्लजान रो परिमाण कमी जाए धरे जो अम्लजान ऑक्सीजन रो परिमाण केते होछि 21 जदि 21 रो 20 की 19 को पले आसे ताले ए 99.9 जो ड्राई एयर अछि ए कंपोजिशन ता रहइबो नाही अर्थात अम्लजान कमी गेले निश्चित भाव अन्य इरिटेटिंग गैसेस विरक्तिकर गैसेस जोटा कि ह्यूमन मनुष्य क्षतिकारक से गैस माने कौन कर वायुमंडल मिसी जीव
मिसिला पर आम कौन कह पिला माने द एयर इज सेड टू बी पोल्यूटेड आम कह जे वायु प्रदूषित हो जाते कह वायु प्रदूषित है इनहेलेशन इनहेलेशन माने कना ग्रहण करबा नेबा of this polluted air can lead to respiratory disorder एवं आमे से पोल्यूटेड एयर को जिते बेले नेबा जो इरिटेटिंग गैसेस वायुमंडल में मिसी जबो सेटा आमे निश्वास नउछु पिला माने तो सेटा जिते मिसी जीवो ताले हमको कोन जे श्वासजनित अनेक समस्या देखा जीवो we may become the victim of respiratory disorder. So dear students, let us see another paragraph. Our air is being poisoned with the byproduct of expanding technological society. देखो expanding technological society means क्या है संप्रसारण वैषयिक विद्या समाज रे एबे वर्तमान देखुथो पिला माने जे सबु जगह रे कलकारखाना सब स्थापित होउचे एक्सपैंडिंग टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी संप्रसारण जनित वैषयिक विद्या वैषयिक शिक्षा समाज द्वारा जो प्रदूषणकारी पदार्थ बाहरुची बाय प्रोडक्ट ता द्वारा एक्सपैंडिंग टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा ता द्वारा वायुटा विषाक्त होउची our air is being poisoned due to an expanding technological society जो द्रुत गति रे हमर समाज से कोन कल कारखाना रे बढ़ी चलीची ता द्वारा जो सब वर्ज्य वस्तु प्रदूषणकारी जो पदार्थ सब बाहरुची ता द्वारा वायु प्रदूषित होउची air pollution is nothing new and it is said that air pollution is nothing new वायु प्रदूषण नुआ कथा नुहे but what is new is the scope and severity of air pollution किंतु पिला माने आगे टिके जहाँ भी वायु प्रदूषण होता नुआ कथा नुहे किंतु वर्तमान कौन what is new कोटा न्यू scope and severity of air pollution एवं एई वायु प्रदूषण परिसर एवं तार क्षतिकारिता होउची एबे नुआ ता द्वारा केते आमे क्षति मनुष्य समाज केते क्षति पाउछु ता द्वारा एयर पोल्यूशन द्वारा सेटा चिंता करिवार विषय तो लेट अस डिस्कस द कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन टू बेटर अंडरस्टैंड द फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ so listen to me what is the composition of air हमें तो डिस्कस करले पिला माने आलोचना करले व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर अर्थात वायुर मिश्रण कौन कौन तो कंपोजिशन ऑफ एयर इंक्लूड्स ए मिक्सचर ऑफ गैसेस comprising 78% nitrogen 21% oxygen and a little less than 1% argon together with 0.03% carbon dioxide when is air said to be polluted आमे केते बेले वायु दूषित हला बेले कहिबा आमे when the oxygen level get reduced or irritating gases enter the atmosphere then air said to be polluted आमे आगुर जानि लेबिले जे जेते बेले ऑक्सीजन रो लेवल टा कमी जीवो एवं विरक्तिकर गैस वायु रे मिसिबो सेते बेले आमे कहिबा जे वायु प्रदूषण हैला नेक्स्ट so in recent times quite large number of industries can be seen in urban areas as well as in rural pockets. Most of these industries spew dense smoke from their chimneys. What is this smoke made of and how is it produced? Industries require steam and to produce it various fuels such as coal, coke, furnace oil are burned. During burning, along with heat, smoke is also produced. Where does this smoke go? Apparently, it disappears in a short time, but in reality, it never does so. Instead, it mingles with the atmosphere, air and pollutes it. We respire this polluted air containing obnoxious gases
ash and dust particle, without our knowledge, our lungs slowly become garbage dumps for these pollutants. So, students, listen to me. In recent time, quite a large number of industries can be seen in rural areas as well as in rural pocket. ତମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କାରଖାନା ସବୁ ଗଢି ଉଠିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେ. Most of these industries spew dense smoke from their chimney. So look at this picture. This is chimney. This is chimney. So most of the industries spew dense smoke. अर्थात এই চিমনির ଅଧିକାଂଶ କାରଖାନା दूषित वायु धुआं वायुमंडल को छाड़ी थांती. What is this smoke made of and how is it produced? तो प्रश्न उठी पारे पिला माने जे এই स्मोक এই धुआं किपरि तयारी होउछि. What is this smoke made of? এই ধুआंटा केउथिरु तयारी? What is this smoke made of and how is it produced? एहा केमिति उत्पादित हो एटा केमिति तयारी होय प्रोड्यूस. प्रश्न उठी पारे. तो पिला माने देखो इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स स्टीम एंड प्रोड्यूस इट वेरियस fuels such as coke, coal, furnace, oil are born. So industries coke, coal, furnace, oil are born. अर्थात कल कारखाना रे पिला माने कोल कोयला कोक माने हला अधा जला कोयला फर्नेस ऑयल माने हला उत्तप्त तैल एई सबु व्यवहार होई थाए कोठी इंडस्ट्रीज मान करे शिल्प कारखाना रे एई सबु व्यवहार हेई थाए. ड्यूरिंग बर्निंग along with heat smoke is also produced. एवं जेते बेले एहा को जला जाए तेले ताको दहन करा जाए. बर्निंग माने काना दहन बा जला जाए along with heat ताप सहित स्मोक इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. एवं ताप उत्पन्न हेबा सहित धुआं मध्य बाहरे. तमाने देखि दिबो पिला माने शिल्प कारखाना मान करे केते केते धुआं बारुछि. चित्र माध्यम रे भी तमे देखि पारुथबो. देखो एटा बाहरुछि. वेयर डज दिस स्मोक गो? तापरे एटा तो हमरो कोन स्मोक ता तयारी हेबा हम जानिले. तापरे प्रश्न उठी पारे जे एई स्मोक ता जाए कुआडे. नो डाउट it disappear in no doubt apparently it disappear in a short time but in reality it never does so. किंतु एटा तो किछि समय परे जेतले धुआं निर्गत होय किछि समय परे देखिबो जे आ धुआं देखा जाय नाही. चिंता करबा निश्चित जे एटा केउठी जाए. where does this smoke go? किंतु प्रकृति रे एटा तो मिसि जाय वायुमंडल रे किंतु किछि समय परे देखा जाय नाही. किंतु प्रकृति रे एटा देखा जाए नाही तार अर्थ नय जे तार प्रभाव वायुमंडल रे रहिबो नाही. इंस्टेड इन मिंगल्स विथ एटमॉस्फेरिक एयर एंड पोल्यूट्स. एटा वायुमंडल रे मिसि जाए एवं वायु को प्रदूषित करिथाय वायु को दूषित करिथाय. ओटा जोटा शिल्प कारखाना रो चिमनी रु जो धुआं सब निर्गत होइथाय सेटा औ वी रेस्पियर दिस polluted air containing obnoxious gases. तो तुमने देखि थबो पिला माने obnoxious gases मीन्स हला पिला माने अप्रीतिकर गैस जोटा कि शरीर पई ठीक नुहे. ता कोन कहबा हमें obnoxious gas unpleasant. ता कहबा हमें कोन unpleasant. एटा देखो जो चिमनी देखु थबो. लुक एट दिस पिक्चर. देखो these are chimneys and smoke. औ नौछु किए आमे निजे नौछु कि नहीं. चित्र देखि पाउछो. चित्र देखो विषाक्त बा दूषित वायु को किए नौछु जो चिमनी रु जो धुआं वायुमंडल रे मिसुछि सेटा को आमे निश्वास रे आमे नौछु. obnoxious gases ash पाउंस dust particle धूलिकणा. without our knowledge our lungs slowly became garbage dumps for the pollutant. हमरो अज्ञतारे आमे न जानी कौन होची धीरे धीरे आमर लंग्स कौन होची पिला माने आमर लंग्स गोटे अलिया गदारे परिणत होची. ए दूषित जो वायु नेबा द्वारा आमर लंग्स कौन होची पिला माने अलिया गदारे परिणत हो जाउची. तो
What fuels do the industries use? What fuels? The industries use coal, coke, furnace oil, etc. What fuels do the industries use? The industries use coal, coke, furnace oil, etc. How does the release smoke affect man? जो गैस बाहर मनुष्य को केमिति प्रभाव पकाउछि? The industries burn various fuels like coal, coke, furnace oil, and with the burning along with the heat, there is production of heat too. The smoke produced by the industry get mixed with the atmosphere and air and pollutes it. तो इंडस्ट्री रे कौन होची पिला माने विभिन्न प्रकार fuel माने जदि जला होची एवं सेटा जल्ला परे ताप सहित जो धुआटा बाहर सेटा वायुमंडल रे मिसुची आ से वायुमंडल को आमे निश्वास नेबा वायु निश्वास नेबा फल रे आमे ता द्वारा कौन होची पिला माने आक्रांत होची सेटा हमकु प्रभाव पकाउची. Let us see another paragraph. Thermal power station are rated the first among the industry that discharge the high amount of smoke as other significant industries contributing to air pollution are cement, then steel and ore processing industries. Some of the chemical industries also release toxic fumes into the air along with smoke. Look at the picture. This is thermal power. This is cement factory. This is steel plant. This is steel plant. So thermal power station तापज विद्युत केंद्र जोटा को आमे कहूची तापज विद्युत केंद्र रे विद्युत उत्पादन करबा पई मैक्सिमम हमरो कोयला को जले कि विद्युत उत्पादन कराई से बेसी मात्रा कोयला ही व्यवहार होई थाए थर्मल पावर स्टेशन रे. थर्मल पावर स्टेशन रे जो निर्गत धुआं वायुमंडल को जेतिकी विशुद्ध करूची आ कोनोसी कारखाना सेते परिमाण रे वायुमंडल को दूषित करू नाही. एटा जेते परिमाण रे दूषित करछि कोउटा थर्मल पावर स्टेशन आर द रेटेड द फास्ट अमंग द इंडस्ट्री एवं कल कारखाना मानक मध्य एक नंबर अछि थर्मल पावर स्टेशन जोटे कि बहु मात्रा रे वायुमंडल को दूषित गैस छाड़ी थाए. तापरे कम परिमाण रे तातु कम परिमाण रे सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, ओरे प्रोसेसिंग, धातुपिंड प्रक्रियाकरण द्वारा मध्य आमर वायु प्रदूषित होता है. सम ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रीज आल्सो रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स इनटू द एयर along with smoke. आमर केतेक रासायनिक कारखाना जो अछि सेटा मध्य वायुमंडल को विषाक्त धुआं छाड़ी थाए, विषाक्त बाष्प टॉक्सिक फोम छाड़ी थाए. Where do the thermal power station cause more pollution? Where do thermal power station are release high amount of smoke and ash and this is where they cause more pollution. एवं thermal power station कौन सबुठारु बेसी परिमाणर धुआं वायुमंडल को छाड़ी थाए एवं सेथिपाई सेटा वायुमंडल को बेसी परिमाण रे दूषित करि थाए. What are the other industries equally harmful or us? आउ को इंडस्ट्री सम परिमाण रे वायुमंडल को दूषित करिबारे दायी? सीमेंट, steel and ore processing industries are the other industries that are equally harmful. अर्थात सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, ओरे प्रोसेसिंग प्लांट एई सब मध्य वायुमंडल को दूषित करिबारे तांकर भी अवदान अछि. So this was all about our discussion paragraph and let us see the causes of air pollution. One by one I shall say you or tell you. You listen to me mindfully. तो मन देखिरे सुनो मु गोटे पर गोटे कहूछि जे causes of air pollution. Large number of industries spew dense smoke from chimneys. This smoke is produced by various fuel such as coal, coke, furnace oil. When these are burned, where does the smoke go? They mingle with the atmospheric air. It pollutes air. This polluted air contains obnoxious gases, ash and dust particles. So our lungs become garbage dumps of these pollutants. Thermal power
station, cement, steel, or ore processing industries are responsible for high amount of air pollution. High amount of air pollution. This is the cause of air pollution. So, dear students, let us discuss some multiple questions. You have to choose the appropriate answer. I will ask you the question, then you have to choose the appropriate answer given 4 responses. So, वर्तमान आमे क्वेश्चन विषय आलोचना करम पिला माने समस्त रेडी तो माने कहबो हाथ टेकिबो नै पिला माने देखो आमे हमरो क्वेश्चन सेशन को आसी गेले तो कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज डैश हमरो चारटा रेस्पॉन्स अछि जोटा ठीक सेटा कहबो द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज डैश जगदलपुर भोपाल पटना शिमला Bhopal. who can say Bhopal. very good, excellent, very good. Number 2, the industrial accident in Bhopal took place in the year dash. 1984. 1984, very good. 1984, good. Then number 3, the chemical plant at Bhopal was operated by dash. Samsung Digital. Union Carbide. Very good. Union Carbide. Good. Very good. Then how many people in Bhopal were killed due to the industrial accident? 4,000. 4,000. Very good. 4,000. 4,000. Very good. Good. Man cannot live without dash for a minute. Who can say, raise your hand? Breathing. Breathing. Very good. Good. Very good. Sir. Every day a large amount of pollutants enter our body through dash. Respiration, consumption, operation, respiration. Very good. What is your name? Respiration. Good. Very good. Air, which is a mixture of several gases, consists of dash percent nitrogen. Dash percent nitrogen. 78. 78. Very good. 78. Good. Please sit down. When dash level is reduced in the air, irritating gases enter the atmosphere. When dash level is reduced in the air, irritating gases enter the atmosphere. Oxygen. Who can say? Oxygen. अन्य पिला माने कहो अन्य पिला माने आउ के कोइ परिबो Oxygen. Very good. Next number, if we respire polluted air, it leads us to dash. Mental disorder, respiratory disorder, cardiac disorder, optical disorder. Who can say? Respiratory disorder. Very good. Most of the industries dash smoke from their chimneys. Spew, flue, exhaust. Who can say? Spew. Option B. Spew. Option B. Very good. B. Very good. Sit down. Thank you, sir. Then, number 11. Coal, coke and furnace oil are called dash. Fuel, fodder, fire, ore. अन्य स्कूल किए कहि परिबो Option A. Option A, fuel. Option A. Good. Very good. Thank you, sir. Then, number 12, we respire the air containing obnoxious gases, and without our knowledge, our lungs become dash. Garbage carrier, garbage dumps. Very good. Excellent. Please sit down. So, Option B. option B, garbage dumps. Good. B. Very good. So, पिला माने हमरो आजिकार पाठ एठी शेष हला
ତମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।